Party election has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं आप जानते हैं? हाँ नहीं मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात, मैं इसलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता. मैं सर next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. He covered हो चुका है ना ground. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mian Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections, and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B, 1A, तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल. ECP के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It says settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ye hai that I'm reading Article 199, subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order, isme clause 2, declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court.
ना ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में, इट्स नॉट द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में जाएंगे ना तो इट विल कट बोथ वेज। बाय अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, they'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province, they'll say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing ECP elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But देखिए ना, declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है इसका। How does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your lordship's impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें। बस जल्दी कर देता हूँ। आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी। My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been... ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो, आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज। जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ भाई, राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट। कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। व्हाई ए पर्सन's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now sir, two more submissions and that's it. I will not take your lordship's time. ECP... Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship you don't want to suffer the consequences. I should conclude early so that... Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. By and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया। देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up, why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for
something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. Sir, founding member who turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की ये नहीं है. देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो. जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी जो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं, कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें. क्योंकि आपने खुद देखी, तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं, परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं, आप इसका जवाब दे देना. आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं, in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते, ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए एक आदमी, नो, आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. Challenge not us. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं, आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए, मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे. मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए ना. He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना. अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना. क्यों एक मतलब इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है. इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, हम ये बात बार सुन चुके हैं. मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब भी वर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली.
اب ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تو آپ اس کو کہتے ہیں چلیں اس کو چھوڑیں. 205 سیکشن 205 ہے, پھر اس کو بھی ڈکلیئر کر دیں انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ایکٹ کا, کہ اگر آپ ممبر کو نکالنا چاہے خوشی سے نکالیے, اب کب منع کر رہے ہیں؟ اگر ایک طریقہ کار ہے نکال لیجیے اس کے تحت. سسپینشن اور ایکسپلشن آف اے ممبر 205 میں لکھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو بھی اگنور کریں؟ آپ کہتے ہیں چلیں جی چھوڑیں اس کو. کیوں چھوڑیں ہم بھائی؟ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں آتے, اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے اس بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہاں ایگریونس سیکشن 205 کا ہے, then he would have been a petitioner that he has been expelled. دکھائیے نا, میں نے یہ ایکسپیل کیا ہوا وہ تو کوشچن جناب کے سامنے ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پٹیشن میں کہہ دیا کہ میرا ممبر نہیں ہے نا, تو آپ کے کہنے سے بس کافی ہے. کافی ہے. پارٹی سے نہیں, اگر اس میں ان کا ڈفرینس ہے تو پارٹی کو سو کرتے and would have challenged that termination. میرا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, میں تو پارٹی میں کام کرنا چاہتا ہوں. That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable Azab, if court. you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you under should show me. میں 205 کے تحت میں چیلنج کروں گا. No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, پارٹی ہو پھر کو میں ہی ڈینائی کر رہا ہوں, تو دیکھیں سیلف سرونگ آرگومنٹ تو نہیں چلے گا. یہ چلیں خیر آگے بڑھیں. We have to conclude this now. میری گزارش یہ ہے کہ denying party symbol, یہ ایک الگ بات, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. یہ آپ نے کہہ دی بات, ہم نے نوٹ کر لی. نیکسٹ پوائنٹ. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. دیکھیں اب ایک بات آ جائے گی, do you deprive 850,000 of your memberships the right of vote? You can't say کہ میرے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ اور دوسرے کے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ has to be the same. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں citizens of Pakistan in millions and millions, 5 کروڑ ہو سکتا ہے ووٹر ہمارے ہوں آج, by this act of ECP they are being deprived of their right to vote, which is a fundamental right under Article 7. خان صاحب یہ بات ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, آپ کوئی اب اس کو آگے بڑھائے نا بات کو. اس کو آرٹیکل 2(a) کے تحت بھی دیکھیں نا, ہم نے پڑھا ہوا آرٹیکل جناب کی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی پڑھ لینے دیں. ہاں پڑھیں مگر ٹائم کی بات ہے. پھر 2(a) the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. اب اس کو annex پڑھیں گے تو اس میں جو پہلی چیز دی گئی ہے وہ chosen representative کی بات کی گئی ہے. سر اس میں یہ کہا ہے wherein the wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی perhaps بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کو الیکشن سے باہر کر دیں گے تو پھر اس اسٹیٹ کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ چوزن ریپرزینٹیو تو بہت سارے فارغ ہو گئے. نتیجہ کیا ہے ایسے الیکشن کا جس میں ایک پاپولر پارٹی with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even یہ ملین والی بات ہو گئی نا, آگے بڑھتے ہیں نا. اب یہ ہم نے we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. اب آخری بات میں کہوں سر, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the constitution is equally a legal and a political document. جی
So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications. And Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and these consequences of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizutin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं। मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respondent number 10. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे। I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं। जी मेरा नाम यूसुफ अली है। एक सेकेंड, साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी। एक मिनट, क्या नाम है? यूसुफ अली। जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे। किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से। अच्छी बात है। 2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से। पीए एमपीए स्वाबी वन से। स्वाबी वन से। हाँ जी। आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था। ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट। भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे, हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से, कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में। आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं PTI में 2006। महमूद अहमद खान जी,
جی میں 2006 سے پی ٹی آئی میں دوحہ قطر میں جب تھا تو میں نے جوائن کیا تھا اور خان صاحب کا وہاں میں نے فنکشن بھی کروایا تھا رمادہ ہوٹل میں اور 2010 میں میں ریٹائر ہو کے کیم ڈاؤن ٹو اسلام آباد اینڈ اسٹارٹڈ ورکنگ ود پی ٹی آئی اسلام آباد جی آفس ایز واٹ؟ میرا تھوڑا سا آئی ہیو سب آپ کیا کرتے تھے ان کے دفتر میں؟ کیا کام کرتے تھے؟ کام کیا کرتے تھے آپ؟ I joined them as an ordinary member. Then I was given the two tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. کوآرڈینیٹر. تو آپ اب کس پارٹی میں ہیں؟ اب کس پارٹی میں ہیں آپ؟ پی ٹی آئی میں نے زندگی میں ایک ہی پارٹی جوائن کی ہے, اسی میں رہنا ہے, اسی میں رہوں گا. دیٹ از پی ٹی آئی اصل. آپ کو الیکشن لڑنے دیا یا نہیں دیا؟ انٹرنل الیکشن کا بالکل میرا ارادہ تھا اور بات یہ تھی کہ میں کس بات کا الیکشن لڑوں. مجھے کئی پوزیشنوں کا نہیں پتا تھا, مجھے پروسیس کا نہیں پتا تھا, مجھے لسٹ کا نہیں پتا تھا. میں نے الیکشن, میرا پروگرام تھا میں اسلام آباد سے ہوں تو میں فوکس اسلام آباد پہ کروں گا. لیکن there was no information. نامینیشن پیپر دیا آپ کو یا نہیں دیا؟ نامینیشن پیپر دیا یا نہیں دیا؟ نہیں سر, نہیں, انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا کہ کون کون سی پوزیشنز کا الیکشن ہونا ہے. نامینیشن تو اس کے بعد آتا نا, پہلے یہ بتاتے کہ یہ الیکشن پوزیشن ہیں. ان کو آپ سے کیا پرابلم ہے؟ مجھے پرابلم ہے. ان کو کیا پرابلم ہے آپ سے کہ آپ کو نہیں دیا؟ یہ تو ان سے پوچھیں. مجھے شاید, میں ڈیموکریٹک, آئی بلیو ان ڈیموکریسی. آئی بلیو کہ پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک رائٹ ہونا چاہیے, ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, پارٹی میں فائنینسز کلیئر اور اس کا کلیئر آڈٹ ہونا چاہیے. یہ کلٹ میں کنورٹ نہ کرو. We want democracy in the country and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ٹھیک ہے, کیا وہ آپ بھی بتائیں, اپنا تعارف کرائیے. یہ کون سی ریسپونڈنٹ؟ نمبر 11. نام کیا آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورین فاروق خان. آپ کس پارٹی میں ہیں؟ جی میں پی ٹی آئی, میں نے 99 میں جوائن کی تھی اور بہت سارے عہدوں پہ رہی ہوں. مطلب کراچی. آپ کس عہدے پہ تھیں یا عہدہ نہیں تھا؟ نہیں, میں بھی آپ کو سارے عہدے بتا دیتی ہوں. مطلب 99 میں ایز اے وومن ونگ کی پریزیڈنٹ میں کراچی کی تھی. اس کے بعد ایک ذرا آہستہ, ویمن ونگ پریزیڈنٹ کراچی. اس کے بعد پھر 2003-04 سے میں عمران اسماعیل صاحب جو کہ سندھ کے پریزیڈنٹ تھے, ان کی سندھ کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی. جی 2009 میں ہمارا لیبر ونگ بنا تو اس میں میں پہلے تو پنجاب کی ایز اے جنرل سیکرٹری آئی. 2009 پارٹی کا لیبر ونگ بنا جس کے پریزیڈنٹ تھے زبیر خان, تو ان کے ساتھ میں پنجاب سے پہلے آئی, پھر لیکن انہوں نے مجھے مرکز میں لے لیا اپنے ساتھ, پریزیڈنٹ وومن ونگ لیبر. اس کے بعد پھر لیبر پالیسی کمیٹی بنی ہماری, جو کہ رانا سمیع صاحب تھے, ان کے ساتھ میں لیبر پالیسی کمیٹی کی بھی ممبر تھی. لیبر پالیسی کمیٹی. Then afterwards, ایک سیکنڈ, لیبر پالیسی کمیٹی. اس کے بعد نعیم الحق صاحب ادھر شفٹ ہوئے کراچی سے, مطلب ہی واز ڈائڈ 2 years back. نعیم الحق چیف اسٹاف آفیسر آف عمران خان. تو آئی یوز ٹو اسسٹ ہم ان دا سینٹرل آفس ایز ہز ایگزیکٹو اسسٹنٹ. سینٹرل آفس ایگزیکٹو اسسٹنٹ ٹو چیف آف مسٹر نعیم الحق. جی نعیم الحق. اور اس ان کا ڈیزگنیشن کیا تھا؟ جی وہ چیف اسٹاف آفیسر تھے عمران خان کے ٹل ہی واز دا پرائم منسٹر, ٹل ہی ڈائڈ. نہیں, پارٹی میں کیا ہوتا تھا؟ وہی چیف اسٹاف آفیسر تھے, مطلب ہی واز مینیجنگ ٹائم آف عمران خان چیئرمین. اب آپ کس پارٹی میں؟ میں اسی پارٹی میں ہوں. اور لاسٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس دن عمران خان صاحب کو ادھر عدالت میں پیش کیا گیا اور عمر عطا بندیال صاحب کی اس میں, تو آئی واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا سپریم کورٹ, جس کی میرے پاس ویڈیو بھی ہے, اور میرے ساتھ تھے ہمارے دیر اپر دیر. نہیں, اب بھی آپ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھیں؟ جی پارٹی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ایز پارٹی پالیسی اور پارٹی کے آئین کے مطابق کہ ہر پرسن کو رائٹ ہے الیکشن کا, کیونکہ میں بہت زیادہ سبمسو قسم کی بندی ہوں, مطلب شرافت ایمانداری سے چلنے والی. تو میں نے کہا شاید اس طرح مجھے موقع مل جائے کہ میں کسی طرح کسی
उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन. और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है. तो देन आई सेड ओके. और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है. नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो हमें पता चलेगा. चले वो तो जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह. आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने. कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है. ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है. अच्छा, ठीक. तो बाकी ये कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाह रही थी. और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नेमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है. और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है. अच्छा, चलें. और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी. बिलाल अजहर राना. अजहर राना, ठीक. जी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ. 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम. बिलाल अजहर राना. इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ. मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ. आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे. नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को. उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन किया आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी. मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया. और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में कोई ओहदे पे गड़ी चाऊ में. कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी. अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा. आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने बात. नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था. मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को. तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं. तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी. तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी. तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग PTI में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से. तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए. ठीक. और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर. आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु. सर मैं टोबा टेक सिंह से चक नंबर 312 गाँव से मेरा ताल्लुक है सर. मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना UC काशी से टोबा टेक सिंह से. UC काशी टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था PTI का सर. कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020. फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में PTI की तरफ. कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के. आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गाँव पे. जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था PTI का. प्रिजाइडिंग ऑफिसर. बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में. मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई. अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे. फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? मैंने UC का इलेक्शन लड़ा था. हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था. नहीं वो छोड़े, कौन सी UC? 81 से सर. ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर. अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था? कौन सा साल था? ये 2015 सर. ये आप PTI के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था. आपने PTI कब ज्वाइन की? सर 16 में.
joined in 2016. अब किस पार्टी में आप? सर PTI में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को PTI सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं PTI सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक्सिंग में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। मोहम्मद, My lord, may I make short submissions on Very behalf of the short. board? Very short. I'll be as brief as I can. you were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court through the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to जी मिला ये 171 जी। as my lord will observe, my lords will observe and lady, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PTI की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस, with us meaning they've passed away. अच्छा, Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, एक सेकेंड, 7 9, 10 and 11 have left. party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. ठीक। Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active In the party? I believe he's still in the party. Ji, bilkul. ठीक। Dr. Alvi, President Dr. Alvi, The president जी। Akbar S. Babar. Ji, they are very much. हाँ, okay। Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, the why are you showing his to relevance? demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया, अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले, ये बाद में आया। ये बात की है जी। I do not have the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी, नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी। ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त। हाँ, read, I can't see your name, read it. जी, इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज,
جی عمران خان صاحب کا سگنیچر ہے اور اس میں سمبل کے لیے جو مختلف بیٹ ٹائگر سارا ہے کہ یہ ہم اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے آگے میں آپ کا نام کہاں جی میں وہ اینکس میں ہے وہ میں دکھا رہا ہوں پیج 61 پر. Mr. Adv Sc Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So یہ جو application بھی تھی مجھے authorize پارٹی کب بنی کون سے سال میں؟ پارٹی تو جی mid 90s میں بنی. یہ آئین جو ہے 99 میں آیا اور یہ جو سمبل یہ 2002 میں کیوں آ رہا ہے؟ پہلے کیا سمبل تھا؟ I'll have to get instruction of that. ٹھیک ہے تو یہ 61 ہو گیا. اور کوئی بات؟ جی اور اس پہ میں نے پھر ایک سیمپل لگایا another founding member کو پیج 63 پہ کہ جب شو کاز دینا ہوتا ہے تو کس طرح شو کاز دیا جاتا ہے پیج 63 پہ. چلیں خیر وہ تو الگ بات ہے. اور اس سے جو کس کو شو کاز دیا ہے؟ this show cause was to Mr. Hamid Khan. کیوں؟ He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. پہلا پیراگراف کیا ہے؟ It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. اس میں جو میں جو یہ کب کی بات ہے؟ This is December 1, 2019. اس میں جو it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice. اور on page 65 I just want to read one line. This is 64 سے پڑھ لینا. Will not quit party under any میں وہ اسی کا جو مین کوٹ تھا وہ کر رہا تھا. سو دکھ کی یہ بات ہے کہ a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. اس میں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں 65؟ یہ جی کہ let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Adv Sc Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound like I شو کاز نوٹس کا کیا بنا؟ I have جو پبلک نالج ہے جی خان صاحب میں چلیں آگے بڑھیں. جی اس کے علاوہ 2 اضافی کاغذات جو میں نے جمع کرائے ہیں یہ وہ ججمنٹس ہیں. ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس میں میرا ممبرشپ کا کوشچن ایز اے فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ میں ممبر ہوں. پارٹی اس کو کانٹروورٹ نہیں کر سکی. اس پیج پہ جی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ 68 سے جناب. صرف وہ جملہ بتا دیں. جی میں اس پہ اس میں آپ رسپونڈنٹ تھے؟ جی اس یہ وہ میٹر ہے فورن فنڈنگ کا. جب میں نے کمپلینٹ اس میں دائر کی تھی اور اس سے جو لٹیگیشن ایمنیٹ ہوئی وہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ ممبر نہیں ہے اس کی شکایت مت وصول کرو. تو یہ we went to the whole membership story multiple times and here Where is it held that you're a member? جی in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that Paragraph 10 پیج بتائیے. page 71 پہ یہ 10 سے شروع ہوتا ہے جی. 11 میں بھی اس کا ڈسکشن ہے اور 13 پہ آ جاتا ہوں 73 پہ ٹو کٹ اٹ شارٹ. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice which was never been issued in case to respondent number 2. یہ ججمنٹ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ فیصلے کی تاریخ ہے جناب 18/7/2018 which is evident on page 68. اس کی انہوں نے اپیل کی؟ There was an ICA and I believe that اس پوائنٹ پہ اپیل نہیں. this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why?
For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, writ होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी file कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके general client knowledge. हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the Your argument client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मे बी मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं उसमें जरा ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना. 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया. एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? November 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी. तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल. वो फिर ये कह मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. Yes. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं हैं. ये गलत ठीक नहीं है. है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. तो आपसे इनको गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी. पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231, paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I along with a delegation of PTI members visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे. बट अभी मे बी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं. मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है. इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है. वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे. जी बेहतर. अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो आगे करवा. तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें. मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई. करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol.
एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया, देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, ये इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, I will not take more than 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books? जी page 100 of the petition, page 100 जी। जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल, एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after जो नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, PTI के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी। या बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हमें अवॉइड कर रहे हैं चीजें। जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता हूँ। मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी। I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का, तो वहीं पर रहना चाहिए था। ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड। ये जो पिटीशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं। बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि 1
یہ کون ہے آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں؟ My colleague Badr, he's been very kind and helpful and also been He is not neither kind nor helpful because he would be checking when we asked a question کہ انہوں نے الیکشن پٹیشن جو پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی اس میں یہ انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ لاہور میں بھی میں نے پٹیشن فائل کی. وہ پھر اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, ان کو دے دیں اور چیک تو کر لیں. جی بدر جسٹ مینشن کہ میں نے چیک کیا سرٹیفکیٹ میں انہوں نے ایسا نہیں لکھا, ان کا فرسٹ پٹیشن ہے بٹ نہیں وہ پٹیشن پشاور میں فرسٹ ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی لاہور میں بھی ایک پٹیشن ہے, بے شک اس کی وجہ بتا دیں کہ جی دوسرا مسئلہ ہے, ادھر دوسرا مسئلہ ہے. نہیں جی ایسا نہیں. جو میں جس کا وہ ذرا on a lighter note تھا. I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. نہیں کہہ رہے ہیں بٹ ایکچولی پیرا 20 میں ذکر کیا سرٹیفکیٹ میں نہیں ہے. 20 سرٹیفکیٹ میں پیراگراف 20 میں. 20 میں ایک سیکنڈ نہیں پیج بتا دیں پٹیشن کا پہلے. پیج 38 کینسلیشن ممبرشپ کا بھی بتا دیں. پیراگراف 20 میں پڑھیں. That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its results along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But اسی زمین میں اس میں آپ نے نمبر نہیں دیا اور اس میں آپ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. میرے خیال اگر یا کیا وہ بتا دیں, وہ والا پورشن بتائیں کہ یہ الگ کنٹروورسی ہے. وہ I mentioned it, that was the question. I mentioned کیا پیج 50 پہ دیکھیں گے جناب سرٹیفکیٹ. Lordship, I've just received پیج 50 پہ جو سرٹیفکیٹ ہے, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. وہ تو بات صحیح ہے ان کی. Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IPE. یہ کون سی پٹیشن ہے 5791 جس میں ڈائریکشن دی تھی کہ جی آپ نہیں پتا, آپ ایسے کہہ رہے ہیں کسی نے اس کی نشاندہی نہیں کی ابھی تک. میں ابھی بتا دیتا ہوں. اینڈ پیج 602 پہ جناب فیصلہ اس کا, اس کی پٹیشن لکھی تھی والیوم 3 602 پہ فیصلہ ہے جی. And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. یہ ذرا پڑھیں, یہ کسی نے آج تک ذکر نہیں کیا تو یہ کیا چیز ہے؟ 602 پیج پڑھتا ہوں جی. Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of... یہ سٹیک آرڈر دکھائی 11/12 اور 15/12 یہ کیا ہے؟ جی میں لگایا اس میں میں دیکھتا ہوں سر اس میں. اور یہ پٹیشن بھی بتا دیں کس پیج پہ ہے؟ پٹیشن واز 585 سر.
जो नहीं, इसका ये जो 11 इसमें are you sure? अच्छा, अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटिशन में ने क्या मांगा था? तो प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब, on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Aage it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other points? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that